They took 45 minutes to get my burger, but the beautiful waitress slipped me her number on the napkin. So I guess it's a happy ending. It's a very cheeky happy endings here. Okay, so one is my best mate was dating a guy who lived off her. She lost her job, she lost him, she got a new job, and he is now homeless. Happy ending. Quite. I don't know. काफ़ी अलग चीज़ें सोचता हूँ मैं. ख्याल आते हैं. मेरे पास अलग अलग छोटे मोल्सकिन डायरीज़ हैं. कुछ ना कुछ मैं लिखता रहता हूँ. कभी ये नहीं सोचा कि एक कहानी लिखूं या कैसी कहानी लिखूंगा, लेकिन आइडियाज़ लिखता हूँ और बाद में पढ़ता हूँ और सोचता हूँ दैट्स इंटरेस्टिंग कि एक टाइम पे मैंने ऐसा सोचा था. सो आई लाइक द आइडिया ऑफ अ जर्नल एंड अ डायरी एंड टू राइट थॉट्स, बट नेवर थॉट ऑफ राइटिंग अ स्टोरी. इट्स अ डिफरेंट. बहुत वक्त की ज़रूरत होती है और आई थिंक इफ़ यू आर वर्किंग एज एन एक्टर मुश्किल हो जाता है टू टेक ऑन सच अ बिग प्रोजेक्ट लाइक राइटिंग समथिंग. अलग अलग कैरेक्टर्स करना पसंद करूँगा. मतलब इट साउंड सिंपल, लेकिन एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए और अच्छी कहानियों को फिल्माना चाहिए. और अगर कहानी अच्छी है तो इट्स ऑल फाइन. मैं चाहूँगा कि कुछ अलग अलग होता रहे, ये नहीं कि सिर्फ कॉमेडीज़ हो रही हैं या सिर्फ ड्रामा हो रहा है. अगर दोनों हो जाएं, जो भी मूड करे, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्पेशल होनी चाहिए. What was the reaction? How did you prepare yourself for this role to get under the skin of an author? Of being a writer? Yeah. It's great. I just grew my hair long. I didn't shave. I stayed home. I wore underwear and loose t-shirts and ate a lot of popcorn and, sort of drank some whiskey and didn't sleep at night. Thank you, sir. करीना ने इसमें कैमियो किया है, so कुछ पैसे वैसे लिए आपने से उन्होंने इसके लिए? नहीं, लेकिन हमने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत घड़ी ली थी एज अ प्रेजेंट. हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे लिए कुछ फ्री में करे. वो भी एक आर्टिस्ट हैं, तो उनका वक्त हम बर्बाद नहीं करेंगे. I think the thought of a happy ending is a bit tricky because, we've been talking about this for so long, and when you say ending, it seems like it's an end of something, and when you end something, it's never normally happy, is it? So I hope I never have sad moments that lead to a happy ending, but I just hope I have these amazing chapters in my life, and I hope each of them ends happily. So I hope for a nice, easygoing, happy life. Thank you. Well, I think a really happy ending would be if we finish promoting our movie well, go to Delhi, have a nice premiere, and have a very successful first week or first day. Would be a very happy ending to a saga of tension, preparation, and nerves before release. Liana, what about you? I honestly, I share the same thoughts because it's been quite crazy promoting the film, and I think the nerves are really starting to set in now. So a happy ending to this entire journey would be just people loving the movie and enjoying it as much as we've enjoyed making it. It's been a lot of fun making the film, it really has. So if they can share a little bit of that fun, I think we probably have a success in our hands. Absolutely. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.